अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मैं हूं हमज़ा गज़नवी और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं एक और नॉट द 9 PM बुलेटिन के साथ। FIA ने 15 लोगों को समन किया अली ज़फ़र के केस के ऊपर। ये कि जी इन्होंने डेफेमेशन की है अली ज़फ़र की, क्योंकि अली ज़फ़र ने डेफेमेशन नोटिस दिया हुआ है मीशा शफ़ी को ऑन हरासमेंट, और एक्चुअली अली ज़फ़र ने हरासमेंट नहीं की सपोजिडली। फिर FIA ने समन किया अली गुलपीर, महम जावेद अमंग मैनी अदर्स। द प्रॉब्लम है दैट इन सब ने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार शायद मीशा शफ़ी अगर हरासमेंट नहीं भी हुई, लेकिन हम इस केस के साथ हैं क्योंकि इंडस्ट्री में हरासमेंट, जैसे मोमना मुसैसन ने कहा, कहती है मेरे साथ भी हुआ है मैं, लेकिन दिस केस गोज मच बियॉन्ड अली ज़फ़र। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेटमेंट। आयशा उमर ओपनड अप, Usman Khalid Butt opened up about his own personal turmoil in this industry. These are real cases which have real effect on the society. इसका एक spilling effect होता है। For example, अगर आपने हार्वी वाइनस्टीन का US में अगर आपको केस याद हो मीटू का, तो एक आम उसका ज़्यादा इफेक्ट है कि एक आम औरत भी उठना शुरू हो गई थी अपने वर्क प्लेस की हरासमेंट के इशूज़ भी रेज करने। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हुआ, मीशा शफ़ी तो खड़ी हुई, आम औरत जो खड़ी होगी अब वो भी नहीं कुछ बोल सकेगी हरासमेंट के ऊपर, क्योंकि पता है अगर अगला आदमी पावरफुल है और उस पर लॉयर्स वगैरह हैं अच्छे, तो वो कोई डेफेमेशन सूट किसी को दे देगा, कहेगा FIA आपके लिए इंचार्ज भी ले ली, अगर FIA कहेगी आप बोल भी नहीं सकती। Nobody is saying whether these people did harassment or not, but the fact that people should be allowed to express their opinion, and government institution should not condone or take action when it comes to personal opinion। का लीगल प्रोसीडिंग पाकिस्तान का सही नहीं है इतना। You already have a law जिसमें कहते हैं जी हदूद ऑर्डिनेंस में 4 लोग जब तक विटनेसेस गवाह नहीं होंगे, एक औरत का रेप हो रहा है तो औरत को जेल में डाल देंगे। The fact that people can now actually lose sponsorship or it can have a tangible effect on them, I feel is a fear that is important. I can be wrong, but इन मोहतरमा से पूछती हैं, ये हमारे साथ आई हैं, कहती हैं लॉयर हैं और बड़ी एक काबिल लॉयर हैं, बड़ी काबिल लॉयर के लिए ही की फर्म में काम करती हैं, तो इनसे ज़रा थोड़ी गुफ्तगू करती हैं। जी मेरे निसा, तो क्या ये हमारा लॉ एक्चुअली परमिशन देता है कि FIA इस तरह का, मेरे पर्सनल ओपिनियन भी मैं कुछ लिखता हूँ, कल को मुझे कह दें एक्सप्लेन करें आपने क्यों लिखा और आप ये उतार भी दें? तो बेसिकली FIA की जो जुरिस्डिक्शन है वो दैट अराइजेज आउट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ठीक है। उसके अंदर द FIA एंड द नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर कैन कॉल इन पीपल एंड हेल्प इन द इंक्वायरी प्रोसेस, बट इट गोज डाउन टू द फैक्ट दैट जो the people on social media were commenting on this issue, were they allowed to comment or not, मतलब were they completely out of line। अब ये defamation के केस के अंदर भी मसला ये होता है कि a defense that the person making the statement has is that if a matter is already in the public domain and it is somehow considered in the public interest, so this is a topic which already exists in the public domain. I mean, Ali Zafar has given interviews about it and a lot has been said already. So, which makes it, I mean, if someone is tweeting about it, it shouldn't be such a big issue. And another thing that the law actually looks at is that are there contradictory statements of the same prominence that exist in the public domain as well. So अगर आप कहें कि अली ज़फ़र के खिलाफ बहुत से लोगों ने they made statements, तो there are lots of people who made शायद more statements against Misha Shafi in that case as well. लेकिन so get it, but is there a way कि हम इसे फाइट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आज उन्होंने अली गुलपीर को बुलाया, समन किया, अली गुलपीर कहता है मैं नहीं हटाता अपना स्टेटस, मैं नहीं आता, लीगली क्या एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ, या कोई भी आदमी जिसको समन किया और कहता है no, we have our every right to say whatever we want. We don't want to remove the post. I mean, it really depends how serious the nature of the allegation made on the person was or how much damage it did. So, I mean, there are mechanisms in the law where you try to determine कि कितना damage, if it's loss of reputation, this, that and the other, monetary compensation, or is it imprisonment. So it really depends on the authority that is providing relief in this case. मेरा अगला सवाल ये है कि being a lawyer and also being a female lawyer, considering we live in a misogynistic society, इसका कोई solution इस तरह के केस तक क्या कोर्ट में निकल भी सकता है? हाँ, I think the masla is that it is a very vague law and it is not, I mean, I don't think the law actively protects the accused. I don't think that is the case. But perhaps you can say that, I mean, the culture or the prevalent mindsets in society give more protection to the person who's accused. But I think in the phrasing of the legislation, there's a problem.
सो आई मीन आपकी जो वर्क प्लेस है वो एक प्रेमिसेस के मुताबिक लाइक डिफाइन हुई है, ऑर्गेनाइजेशन है वो, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट? सो व्हाट प्रोटेक्शन आर यू गिविंग देम जो एक डिफाइंड ऑफिस स्पेस नहीं है? Personal opinion, are you against the social media trial? Are you for it? How do you perceive it? You have to understand that in our society, the atmosphere or the space within which this discussion takes place is very different. And I actually think, I mean, you call them kangaroo courts or whatever, but I actually think people are giving their opinion at the end of the day. No one is aware of the factual situation or the evidence presented before the court, apart from, the court of law. But I think in terms of creating awareness and opening people up to dialogue, confronting some of the problematic stereotypes that exist in people's heads about these, I mean, that can't go away until and unless people start discussing these issues. That being said, एक गरीब औरत है जिसकी तनख्वाह होगी 5,000 कर लें, 5,000 कर लेते हैं, 5,000 एक नॉर्मल एवरेज जो पाकिस्तान में दिए जाते हैं, उनको बहुत तरह से काम कराया जाता है, उसमें अपने बच्चों को भी संभालने में सब कुछ करना है। उस औरत के साथ हरासमेंट होती है, वो किसी तरह एक ब्रेवरी करती है कि नहीं, I'm gonna speak out against my boss, speak out against all this, and we listen to these people कि हमें जी सोशल मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, लीगल सेटिंग्स आ जाना चाहिए। वो औरत जाती है कोर्ट में या किसी के पास, वो क्या करेगी, वो क्या स्टेप्स होंगे, उसके क्या खर्चे लगेंगे उसको लीगल अप्रोच लेने के लिए उस आदमी के खिलाफ? So I mean, obviously it depends on the kind of lawyer that you go to. But आप एक बिल्कुल ही जिसे आप कहते हैं, I mean, आप फटे वाला वकील कह लो, आप, I mean, जो probably settle करवाएगा rather than going against. I think minimum अगर आप मतलब इसमें से कोर्ट का खर्चा, मुंशी का खर्चा, जो एक फाइलिंग का होता है वो निकाल लें, तो I think आपके 30 to 40,000 तो कहीं के नहीं गए. ये just start के आपने दे देनी. Yeah. And I mean, this is a very, I'm being very like optimistic on the lower scale of the minimum. Like, yeah. And with zero help from outside, she can't go on social media. और social media ट्रायल तो गलत है. और उसकी नौकरी भी गई. और ये 40,000 से मिनिमम देने, अगर आगे केस चलना है तो she has to pay more. Yeah, she has to keep paying more as the case goes on. Yeah. So woman who earns 5,000 has to pay 10 times more her income. Yeah. Just to have a chance at fighting her accuser. Yeah. That is the legal setting. That is the legal setting. That's why, guys, we did today's not the 9PM bulletin. It's simply to say that freedom of speech is important. Letting people speak what they want to speak is important, because it's not about religion. It's not about you people on your Facebook right now, on your homes, on your smartphone, your expensive iPhone 10 smartphone, watching this video. In the end, it's about जो लोग प्रॉब्ली आपके घर में औरत काम करती है, या जो एक नॉर्मल आदमी जो इतने अफोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता और नॉर्मल वाइट कॉलर जॉब कर रहा है बंदा, ये उसके बारे में है. They should have the opportunity to say their personal opinion. So this goes beyond Neeraj Shafi, Ali Zafar, or whoever of the A-list celebrity Pakistan is. This is about a simple thing. अगर Ali Zafar बेगुनाह है या नहीं बेगुनाह, गलत है, जो मर्जी है, आप लोगों को उनका पर्सनल ओपिनियन साइड करने से रोक नहीं सकते, और FIA जिस मर्जी बंदे को चाहे समन कर सकता. So before even if somebody in FIA is watching us and about to send us a defamation notice, what can we do? Please do. हम उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, देख लेंगे. But thank you so much. This is not the 9PM bulletin. मैं हूँ हमजा गजनवी और ये हैं महरुनिसा सजाद. अल्लाह के बाद.